Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start problem number 2. The following is the summarized balance sheet of Shiva Kumar Limited as of 31st December. Balance sheet is given: equity and liabilities, shareholders fund, share capital 30 lakh, reserves and surplus 25 lakh, non-current liability, long-term borrowings 10 lakh, trade payable 4 lakh, other current liability, outstanding expense 1 lakh. So you can check how many are the outside liabilities. एक तो long-term borrowings है, trade payable है, other current liabilities. These three are outside liability that should be deducted. Then assets are fixed assets, tangible fixed asset 40 lakh, non-current investments, चाहे current investment हो या non-current investment हो, we must take into account. Then current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. Notes: share capital 10,000, 9% preference share of 100 each, fully paid 10 lakh. तो कंपनी के पास दोनों कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10 लाख रुपीस और उसके ऊपर डिविडेंड पे करना है 9%. दैट यू हैव टू रिमेंबर. Then 20,000 equity share of rupees 100 each, fully paid 20 lakh. Reserves and surplus, general reserve, P&L account, we don't require. Long-term borrowings, 8% debentures, 10 lakh. For the purpose of valuation of share, fixed assets are to be depreciated by 10%. अब ये वैल्यू ऑफ शेयर मालूम करने के लिए प्रॉब्लम में दे दिया है कि फिक्स्ड एसेट में से 10% डिप्रिशिएट करेंगे, माइनस कर देंगे. अब फिक्स्ड एसेट का वैल्यू 40 लाख दिया. इन द बैलेंस शीट इट इज गिवन 40 लाख. 40 लाख में से 10% कम कर दो, 4 लाख कम कर, 36 लाख रुपीस फिक्स्ड एसेट विल टेक. इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 11 लाख. तो बैलेंस शीट का वैल्यू नहीं लेंगे, 11 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट लेंगे. स्टॉक 5,80,000, डेटर्स विल रियलाइज 11,75,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months. अब देखिए डिबेंचर्स 8% है और कितने का डिबेंचर्स है? 10 लाख. तो 10 लाख रुपीस का 8%, इट विल बिकम 80,000. एक साल का डिबेंचर इंटरेस्ट 80,000 हो रहा, लेकिन यहां पर 6 months बता रहा. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 months, आधा साल, हाफ ईयर. तो 8% ऑफ 10 lakhs यू विल गेट 80,000. एक साल का इंटरेस्ट 80,000. तो 80,000 का हाफ कर देंगे, 40,000 रुपीस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग. ये भी एक लायबिलिटी है, तो आउटसाइड लायबिलिटीज में लेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स. तो डिबेंचर्स भी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स भी लायबिलिटी है. तो 10 लाख रुपीस डिबेंचर्स विल टेक and 40,000 rupees interest outstanding on debentures that will take. Next is, and preference dividend for 2004 is to be paid. एक साल का preference dividend भी देना है, preference dividend भी पे करना है, liability हो, तो ये भी एक liability लेंगे. तो एक साल का कितना होता है देखिए, 9% of 10 lakh. preference share capital 10 लाख रुपीस है, उसके ऊपर dividend 9% देना है. तो 9% of 10 lakh 90,000. तो 90,000 rupees is the preference dividend payable and 40,000 rupees is the interest due on debentures. ये दोनों liabilities को हमको लेना है outside liability. Then calculate the value of each share. That's it. We have to calculate the value of share. Now see the solution carefully. Calculation of intrinsic value per share. Fixed assets 40 lakh rupees book value है, उसमें से 10% depreciate कर दिए 36 lakh. Investment given in the problem 11 lakh. Stock 5,80,000, debtors 11,75,000, bank balance 2 lakh. तो total of the assets 66,55,000. अब इसमें से outside liability carefully देखिए. Some new points we are coming across in this problem. 8% debenture 10 lakh rupees. ये तो एक outside liability है. Interest outstanding on debentures. तो 8% of 10 lakhs into 6/12. क्योंकि half year का लेना है इनको. तो 8% ऑफ 10 लाख कर देंगे तो 80,000 एक साल का है, लेकिन एक साल का नहीं चाहिए, 6 महीने का चाहिए.
तो 6 by 12 40,000. Creditors 4 lakh. Liability for expenses given 1 lakh. Preference dividend outstanding for 1 year. एक साल का preference dividend देना है तो क्या रेट से 9% है. 9% of 10 lakh 90,000. These are all the outside liability. Minus कर दो 16 total कर दो इसका 16 lakh 30,000. Now subtract 66 lakh 55,000 minus 16 lakh 30,000. 50 lakh 25,000 is shareholders fund. अब पूरे shareholders का fund जो है 50 lakh 25,000. अब उसमें से preference share capital निकाल देंगे. 10 lakh rupees preference share capital. तो remaining 40 lakh 25,000 rupees is the assets available for equity shareholders. Assets available for equity shareholders, or you can say funds available for equity shareholders, whatever you can call it, or amount available for equity shareholders. Now intrinsic value का formula amount available for equity shareholders divided by number of equity shares. तो 40 lakh 25,000 rupees is the amount available, और number of equity shares are given in the problem 20,000. Notes में देखिए जहां पर 20,000 equity shares है तो 40 lakh 25,000 divided by 20,000 you get 201.25. This is the intrinsic value. That's it. So this is the problem number 2. Now we'll come to the problem number 3. See the problem number 3. From the following information, find out the value of each share. Balance sheet is given. Share capital 2 lakh, reserves and surplus 2 lakh 70,000, long-term borrowings, unsecured loan 80,000, other current liability 20,000. तो आउटसाइड लायबिलिटी दो है, एक 80,000 रुपीस का लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 20,000 करंट लायबिलिटी. एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स नॉट गिवन, इनटैंजिबल एसेट्स गुडविल इज गिवन 1,90,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स. नाउ इंफॉर्मेशन गिवन. नोट्स, शेयर कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 10 each fully paid. We don't have preference share capital. Reserves and surplus ignore, we don't require it. For the purpose of valuation of shares, goodwill shall be taken at 2 years purchase of the average profit of the last 5 years. ये प्रॉब्लम में गुडविल कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट्स में. तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए हमको गुडविल का वैल्यू चाहिए. तो गुडविल का वैल्यू कैसा कैलकुलेट करेंगे? गुडविल विल बी कैलकुलेटेड एट 2 years purchase of the average profit of the last 4 years. पीछे के 4 साल का प्रॉफिट दे दिया, वो एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो लास्ट 5 years प्रॉफिट्स आर 60,000, 70,000, 40,000, 50,000, 50,000. फ्लक्चुएट हो रहा प्रॉफिट, तो वी कैन टेक द सिंपल एवरेज प्रॉफिट. नाउ सी द सॉल्यूशन. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल. पहले गुडविल का वैल्यू मालूम करना, बाद में वैल्यू ऑफ शेयर. तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट 60,000, 70,000, 40, 50, 55. तो पूरे प्रॉफिट्स 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज प्रॉफिट 54,000. तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस. तो 54,000 इनटू 2 1,08,000. वी गॉट द वैल्यू ऑफ गुडविल. अब कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू. एसेट्स गुडविल 1,08,000. तो बैलेंस शीट में जो गुडविल का वैल्यू दिया है वो नहीं लेंगे, बल्कि 1,08,000 लेंगे. इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख, करंट एसेट्स 50,000, लोन्स एंड एडवांसेस 30,000. तो टोटल ऑफ एसेट्स आर 4,88,000. आउटसाइड लायबिलिटी में अनसिक्योर्ड लोन और करंट लायबिलिटी दो ही लायबिलिटी है, दोनों को मिला दो 1 लाख. 1 लाख निकाल दिया तो 3,88,000 रुपीस आ गया शेयर होल्डर्स फंड. अब शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंशियल कैपिटल निकाल देंगे, बट वी डोंट हैव प्रेफरेंशियल कैपिटल, नहीं है. तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3,88,000. नाउ intrinsic value is equal to amount available divided by number of equity shares. 3,88,000 divided by 20,000, 19.40. This is the intrinsic value. This is problem number 3. Now see the problem number 4. The following is the balance sheet of Piyush Company Limited as on 31st March is given below. Balance sheet, share capital 6 lakh, reserves and surplus 30,000. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8%, डिबेंचर 50,000, ट्रेड पेएबल 1 लाख. तो दो ही आउटसाइड लायबिलिटी है, एक डिबेंचर्स है और एक ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स. नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स आर 4,80,000, अदर नॉन करंट एसेट्स आर 40,000. देन करंट एसेट्स आर 2,60,000. टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 7,80,000. नाउ नोट्स, शेयर कैपिटल में 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 1 लाख. तो वी हैव प्रेफरेंशियल कैपिटल और उसके ऊपर डिविडेंड 6%. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each 5 लाख. तो हाउ मेनी शेयर्स आर देयर?
50,000। देखिए 5 लाख रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 यू विल गेट 50,000 शेयर्स, रिमेंबर दैट। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस वी डोंट रिक्वायर इट। टैंजिबल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन फॉर 20,000, तो नेट वैल्यू WDV ऑफ द एसेट्स इज 4,80,000। Other non-current assets, preliminary expenses 35,000, discount on debenture we should not take. ये preliminary expenses और discount on debenture both are fictitious assets. We should not consider while calculating value of share. Now, current assets included investment 60,000, market price of which is 55,000. अब जो current assets balance sheet में दिया है, देखिए current assets कितना है balance sheet में? Current assets are 2,60,000. Other current assets are 2,60,000. तो बैलेंस शीट में दे दिया 2,60,000 के करंट असेट्स है, और वो करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। कितना इन्वेस्टमेंट है नहीं मालूम, यहां पर एडजस्टमेंट में दे रहा करंट असेट्स इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट 60,000, द प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 55,000। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 60,000 बता रहा, लेकिन मार्केट में उसका वैल्यू 55,000, तो कितना कम हो गया? 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया। तो ये 5,000 रुपीज हम करंट असेट्स में से माइनस कर देंगे। करंट असेट्स 2,60,000, तो 2,60,000 माइनस 5,000। देन डेटर्स इंक्लूडेड इन करंट असेट्स आर डाउटफुल टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 रुपए के है। अब वो 8,000 रुपए माइनस कर देंगे करंट असेट्स, क्योंकि करंट असेट्स में डेटर्स मिला हुआ, वो करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट भी है, डेटार्स भी है, स्टॉक भी है, ये सारी चीजें करंट असेट में आ गए। तो 2,60,000 करंट असेट में से 5,000 रुपीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 8,000 रुपीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड स्टॉक एट द एंड डिड नॉट इंक्लूड ए रिटर्न ऑफ 3,000 दो ट्रांजैक्शन वाज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक भी करंट असेट में आता है, और वो क्लोजिंग स्टॉक में एक सेल्स रिटर्न था, वो सेल्स रिटर्न को क्लोजिंग स्टॉक में नहीं ली। एक्चुअली जब सेल करे तो स्टॉक कम हो जाता, और वो सेल्स रिटर्न जब वापस आ गया तो फिर स्टॉक बढ़ जाता। तो व्हेन वी हैव रिसीव्ड द सेल्स रिटर्न वी शुड इंक्लूड इट इन द क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन गलती से क्लोजिंग स्टॉक में सेल्स रिटर्न को नहीं मिला। अब हम मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना क्लोजिंग स्टॉक, कितना रिटर्न हुआ था? हाउ मच वाज द रिटर्न? 3,000। 3,000 रुपए सेल्स रिटर्न आया था, लेकिन स्टॉक में नहीं मिला है, अब मिला देंगे, तो 3,000 रुपीज ऐड कर देंगे। तो 2,60,000 रुपीज जो करंट असेट्स दिया बैलेंस शीट में, उसमें से 5,000 रुपीज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, 8,000 रुपीज इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये दोनों को माइनस कर देंगे, और 3,000 रुपीज इज द सेल्स रिटर्न नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, इसको ऐड कर देंगे, तो विल गेट द करेक्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, ये जो रियलाइजेबल वैल्यू आ गया, इसको हम वैल्यू ऑफ शेयर में कैलकुलेट करेंगे। देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 6,000 व्हिच रिमेन अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स, और एक लायबिलिटी भी है, 6,000 रुपए की लायबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में नहीं ली है, अब उसको यहां पर लेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000। डिबेंचर इंटरेस्ट इज ओविंग फॉर 1 ईयर, ओविंग का मतलब आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट इज ड्यू फॉर 1 ईयर, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी में लेना, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में लिए थे, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, तो 1 साल का डिबेंचर इंटरेस्ट देना है, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, ये सबको हम आउटसाइड लायबिलिटी में लेंगे। Assuming that the other assets are worth their book values, calculate the value of equity share. अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अलग। वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स में करंट असेट्स एज पर द बैलेंस शीट 2,60,000, बैलेंस शीट में करंट असेट्स का वैल्यू 2,60,000, लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5,000 कम हो गया, 2,55,000, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000, 8,000 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी माइनस कर दिए, 2,47,000 आ गया, एड प्लस सेल्स रिटर्न नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, जो सेल्स रिटर्न हुआ उसको स्टॉक में नहीं मिलाए थे, अब ऐड कर देंगे 3,000, तो करंट असेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू इज 2,50,000, ये न्यू पॉइंट है।
adjusted current asset 2,50,000. This 2,50,000 will take into account while calculating intrinsic value. Now calculation of intrinsic value. Assets, fixed assets 5 lakh rupees के, उसमें से depreciation 20,000 निकाल दिया, 4,80,000 प्रॉब्लम में दिया है. Then current assets 2,50,000, this one will take. Total of the assets 7,30,000. 7,30,000. Outside liabilities. अब outside liabilities में 8% debentures 50,000. Interest outstanding on debentures for 1 year. एक साल का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, तो 8% ऑफ 50,000 इज 4,000. ये लायबिलिटी होगी. क्रेडिटर्स 1 लाख. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दे रहा है 6,000 रुपए की लायबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड नहीं करे, अब रिकॉर्ड ले लो 6,000. अर्नियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या रेट से है? 6% ऑफ 1 लाख. तो 6% ऑफ 1 लाख 6,000. 6% ऑफ 1 लाख 6,000, तो 1 साल का 6,000, 2 साल का होना, तो 6,000 इंटू 2 12,000, तो 12,000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड बाहर. तो टेक द टोटल ऑफ दिस 5 आइटम्स, यू विल गेट 1,72,000. टोटल ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे 7,30,000 माइनस 1,72,000, 5,58,000. अब उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल देंगे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 4,58,000. अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड दोनों का मतलब एक ही है. वी गॉट 4,58,000. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000. अभी बता, 5 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 50,000. तो 4,58,000 डिवाइड बाय 50,000 9.16. तो intrinsic value of the equity share is 9.16. This is the end of problem number 4. Come on students, now we'll start problem number 5. See the problem number 5. Determine the value. Determine the value of each equity share according to breakup value method. Breakup value method means intrinsic value. Then as on 31st December, balance sheet is given equity and liabilities, shareholders fund, share capital number 1, 1,50,000, reserves and surplus. Long-term borrowings 5% debentures, outside liability 40,000. Trade payable 55,000, short-term provisions, provident fund, ये भी outside liability. The provident fund is the amount payable to employees. So 3 outside liabilities, 5% debentures, trade payable, provident fund. Fixed assets, tangible, intangible asset में goodwill भी है 10,000, non-current investments, other non-current assets, preliminary expenses, ignore. Then inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. This is the balance sheet given. Now notes, share capital में 5,000, 6% preference shares of rupees 100 each 50,000. So first of all, preference share capital 50,000, 10,000 equity share of 10 each 1 lakh. Then reserves and surplus, capital reserve, P&L account, security premium, deferred revenue expenditure, ये सब छोड़ देना, ये we don't require it. Trade receivable, debtors. Debtors में से good debtors are 30,000, doubtful not provided for are 10,000, total 40,000. यानी 40,000 रुपए के debtors है जिसमें से 10,000 doubtful है. That is the information. Note, preference dividend are in arrears for 2 years. 2 साल का preference dividend देना बाकी है, outstanding है. That will take it under outside liability. Goodwill is worth its book value. तो बुक्स में गुडविल का वैल्यू 10,000 है, सेम 10,000 रहेगा. एंड आउट ऑफ डाउटफुल डेट्स 50% आर रिकवरेबल. डाउटफुल डेट्स 10,000 है, 10,000 में से 50% रिकवरेबल है, तो बाकी के 50% नॉट रिकवरेबल, बैड डेट्स. तो 10,000 में से 50% 5,000, तो 5,000 ले लेंगे. तो गुड डेट्स कितने हैं? 30,000. गुड डेटार्स आर 30,000 और डाउटफुल 10,000 है. 10,000 में से 5,000 रिकवरेबल है, तो 30,000 प्लस 5,000, 35,000 rupees are the debtors we will take. There are contingent liability for uncalled liability on partly paid shares 4,000 and for bills discounted likely to be dishonored 2,000. 2 contingent liability है. एक contingent liability ये है कि पार्टली पेड शेयर, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स, यानी इन्वेस्टमेंट की है दूसरी कंपनी में, उसके ऊपर अनकॉल्ड मनी
तो दूसरी कंपनी कॉल नहीं की अभी तक, तो कॉल कब करेंगे फ्यूचर में, वी डोंट नो. So it is completely contingent liability. It will not become actual liability. The actual liability it will become only when the other company has made a call. दूसरी कंपनी अगर कॉल करी तो पे करना पड़ेगा, जब तक वो कंपनी कॉल नहीं करी पे करने की जरूरत नहीं है. तो this is a contingent liability. It should not be taken. Whereas the other contingent liability for bills discounted likely to become dishonored. कुछ बैंक से बिल्स डिस्काउंट करे थे and it is 100% likely it will become dishonored. ये dishonored होने के पूरे चांसेस है, और dishonored हो गया तो बिल पे करना पड़ेगा. बैंक से बिल डिस्काउंट करवा लिए, पैसे ले लिए बैंक से, अब वो बिल dishonored हो गया तो हमको बैंक को पे करना पड़ेगा. तो out of these two contingent liability, one is completely contingent, we should not take. Which is contingent? That uncalled liability on partly paid shares. तो uncalled liability on partly paid shares is 100% contingent. It is not an actual liability. We should not take. Whereas the liability on bills discounted likely to become dishonored. This is a contingent liability, but as it is likely to become dishonored, so we'll treat it as actual liability. So in note, after completing the solution, in note you should write down that liability on uncalled liability on partly paid share is a contingent liability, it should not be taken. Whereas liability on bills discounted likely to be dishonored is an actual liability. That's all. Now see the solution here. Calculation of intrinsic value, goodwill 10,000, book value. फिक्स्ड एसेट्स जो बुक में दिया वही ले लेंगे. इन्वेस्टमेंट 50,000, डेटार्स 50,000, ये सारे एसेट्स बुक्स में जो दिया है सेम बैलेंस शीट वैल्यूज. डेटार्स 40,000 माइनस 5,000, पूरे डेटार्स मिलाकर 40,000 है. 30,000 गुड है, 10,000 बैड है, डाउटफुल है. 10,000 डाउटफुल है, तो 30,000 प्लस 10,000 40,000, 40,000 रुपए के डेटार्स है. लेकिन 40,000 में 10,000 डाउटफुल है, और वो 10,000 में भी 50% रिकवरेबल है, 50% बैड है. 5,000 रुपए रिकवरेबल है और 5,000 रुपए बैड डेट्स है, तो निकाल देंगे बैड डेट्स को. 40,000 माइनस 5,000 इज 35,000, बैंक बैलेंस 30,000. टोटल ऑफ द एसेट्स. आउटसाइड लायबिलिटी में 5% डिबेंचर्स, सन्डरी क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, ये तो आउटसाइड लायबिलिटी दे दिया. एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर 2 years. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड ड्यू है, तो 6% ऑफ 50,000 3,000 into 2 6,000. बिल्स डिस्काउंटेड लाइकली टू बी डिसऑनर्ड, ये कंटिजेंट लायबिलिटी थी, लेकिन अब एक्चुअल लायबिलिटी क्योंकि लाइकली टू बी डिसऑनर्ड है 2,000. तो टोटल ऑफ द लायबिलिटी इज, टोटल ऑफ द आउटसाइड लायबिलिटी था 1,23,000. तो 425 माइनस 123 3,02,000 इज शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड का मतलब पूरे शेयर होल्डर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस सब मिलाकर इतना है. अब उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को निकाल दो 50,000, तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जो बचेगा 2,52,000. इसके नेम्स अलग अलग है. वी कैन राइट डाउन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, वी कैन राइट डाउन अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कुछ भी लिख सकते हैं. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो 2,52,000 डिवाइड बाय 10,000 शेयर्स. प्रॉब्लम में इक्विटी शेयर्स देखिए 10,000 शेयर्स है, तो 25.20 is the intrinsic value of share. That's it. Now see the 6th problem. Problem number 6. It is provided in the articles of association that at the death of a shareholder, his shares will be purchased by the remaining shareholders at a price to be settled on the basis of the last balance sheet. तो एक कंपनी का आर्टिकलशिप है, इन्हें नॉर्मली प्राइवेट कंपनी है, तो एक कंपनी के आर्टिकलशिप में लिखा हुआ है अगर कोई आदमी शेयर्स बेचना चाह रहा है या डेथ अगर हो गया तो उसके शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स खरीद लेंगे. क्या रेट से खरीद लेंगे? अकॉर्डिंग टू द लास्ट बैलेंस शीट. It is further provided that goodwill should be valued at the base of 3 years purchase of the average annual profit for the last 5 years. तो ये प्रॉब्लम में पहले आपको गुडविल मालूम करना पड़ेगा. We have to calculate the value of goodwill in working note. तो कैसा मालूम कर बोल रहा? Goodwill is 3 years purchase of average profit of last 5 years. तो लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गुडविल. The last balance sheet is share capital 2 lakh, reserves and surplus 3,70,000, trade payable, short term provisions.
तो आउटसाइड लायबिलिटी यहाँ पर ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिया है. एंड नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट में गुडविल है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Then notes, share capital 20,000 equity share of 10 each. Only equity share, we don't have preference shares. Reserves छोड़ दो उसको. Short term provisions में provident fund and workmen saving fund, ये दोनों भी outside liability है. Provident fund as well as workmen saving fund. Non current investments, अब ये non current investment को भी लेना है. Investment हमेशा लेंगे चाहे वो current हो या non current हो. अब non current investment में investments at cost 3 लाख खरीदे थे. कॉस्ट का मतलब खरीदे थे. एट व्हाट प्राइस वी हैव परचेज 3 लाख, बट मार्केट वैल्यू इज 2,50,000. वो इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 3 लाख रुपीस है, बैलेंस शीट में 3 लाख दिया, लेकिन ब्रैकेट में दे रहा कि इस वक्त उसका मार्केट वैल्यू 2,50,000 है. तो वी शुड टेक द मार्केट वैल्यू, नॉट द कॉस्ट. वी हैव टू टेक द प्रेजेंट वैल्यू. अब वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,50,000 है, तो 2,50,000 वी शुड टेक. The profits for the last 5 years were 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000. So we can observe the profits are increasing continuously. बढ़ते जा रहा 15, 20, 25, 30, 35. So whenever profits are increasing trend, we should calculate the weighted average profit. You are required to calculate the price to be paid for each share. So we have to find out the intrinsic value because balance sheet is given. Before calculating the intrinsic value, first we must calculate the value of goodwill. See, calculation of goodwill. Since the profits are showing an increasing trend, so we calculate weighted average profit. The profits are 1, 2, 3, 4, 5. Profits 15, 20, 25, 30, 35 given. Weights are 1, 2, 3, 4, 5, 15. Now multiply P into W, PW. 15,000 into 1, 15,000. 20,000 into 2, 40,000. 25 into 3, 75,000. 30 into 4, 1,20,000. 35 into 5, 1,75,000. Total is 4,25,000. Total of weight 15. The weighted average profit का formula summation PW divided by summation W. 4,25,000 divided by 15. 28,333.33. This is the weighted average profit. अब गुडविल मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई द एवरेज प्रॉफिट विद नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट 28,333.33 into 3. You will get 85,000. You will get 84,999.9999 like that. Round off कर दिए तो 85,000 आए. So 85,000 rupees is the value of goodwill. Now we calculate intrinsic value. So goodwill 85,000 just now we have calculated. Investment 2,50,000. देखिए प्रॉब्लम में जो मार्केट वैल्यू 2,50,000 दिया है, 2,50,000 लेंगे. Then stock 5 lakh, debtors 4 lakh, bank balance 70,000. Total of the assets 13,05,000. Outside liability are workmen saving fund 2 lakh, employee provident fund 1 lakh, creditor 60,000. 6 lakh. Total is 9 lakh rupees. So 9 lakh rupees is the outside liability. Minus कर दो 4,05,000 is shareholders fund. But we don't have preference share capital. Preference share capital नहीं है. So whatever remaining 4,05,000 is the equity shareholders fund or amount available for equity shareholders. The intrinsic value is equal to equity shareholders fund divided by number of equity shares. 4,05,000 divided by 20,000. You will get 20.25. This is the intrinsic value of share. That's it. So we have completed problem number 6. Come on students, now we'll start problem number 7. See the 7th problem. On 31st December 1992, the balance sheet of a limited company reveals the following position. Particulars, equity and liabilities. Share capital 40 lakh, reserves and surplus 11 lakh. Current non-current liability with long-term borrowings 5% debentures. Current liabilities are 14 lakh. Then assets, tangible assets, intangible asset, goodwill. That's all. The balance sheet 75 lakh total. Now notes, share capital 4 lakh equity shares of 10 each. So only equity, we don't have preference. Reserves and surplus. Then last paragraph. On 31st December 1992, the fixed assets were independently valued at 35 lakh. तो बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू है वो नहीं लेंगे, 35 लाख लेंगे. और गुडविल 5 लाख. The net profit for the 3 years were
1990 5 lakh 10,000, 1991 5 lakh 30,000, 1992 5 lakh 20,000, of which 20% was placed under reserve. This proportion being considered reasonable in the industry in which the company is engaged and where fair investment return may be taken at 10%. So here in this problem, balance sheet is given and also profits are given. By using balance sheet, we can find out the intrinsic value, and by using the profits, we can calculate the yield value. So it's a comprehensive problem. Both values we have to calculate in single problem. Compute the value of company's share by net assets method, intrinsic value, and earning capacity method, yield value. So both we have to calculate. So first we calculate the intrinsic value. Calculation of value of share according to net assets method or intrinsic value. Goodwill 5 lakh, fixed assets 35 lakh, current assets 21 lakh, the total assets 61 lakh. Outside liability 5% debenture 10 lakh, current liability 14 lakh, total outside liability 24 lakh. So shareholders fund 37 lakh, preference share capital is not there. So equity shareholders fund 37 lakh. Now we can easily apply the formula intrinsic value is equal to equity shareholders fund divided by number of equity shares. So 37 lakh divided by 4 lakh, 9.25 is the intrinsic value. Half of the problem completed. By using the balance sheet, assets, liabilities, we have calculated intrinsic value. Now by using the profits, we can find out the yield value. Value of share according to earning capacity method. So here calculation of value of equity share according to earning capacity method. So we calculate average profit. Profit खाली current year का नहीं दिया, previous 3 years profits are given. 5 lakh 10,000, 530, 520. Fluctuate होगा. Simple average will take. तीनों को add करके divide by 3 कर दो. Average profit 5 lakh 20,000. It is given in the problem that it's a policy every year 20% of profit will be transferred to reserve. तो ये average profit में से 20% निकाल देंगे. Average profit 5 lakh 20,000 less transfer to reserve 20% of 5 lakh 20,000 1 lakh 4,000. So profit available for equity shareholders 4 lakh 16,000. Now expected rate of return is profit available divided by equity share capital into 100. तो देखिए yield value मालूम करने के लिए हमको ERR मालूम करना, expected rate of return. उसका formula profit available divided by equity share capital into 100. तो 4 lakh 16,000 divided by equity share capital is given in the balance sheet 40 lakh. Share capital 40 lakh, 40 lakh. 4 lakh 60 divided by 40 lakh into 100, 10.4%. So we got ERR. ये जो मालूम करें ERR. Now value of each share, yield value. So expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value per share. So expected rate of return 10.4. Normal rate of return NRR is given in the problem 10%. Last line it is given 10% NRR. Or paid up value per share 10 rupees. So 10 will get cancelled. So 10.4 rupees is the yield value of share. So this is the end of problem number 7. Now see the problem number 8. The following is the balance sheet of Messrs. H. Desai and Company Private Limited as on 31st December 1988. Share capital 1 lakh, reserves and surplus 80,000. Trade payable short term provisions. दो outside liability है, एक trade payable, एक short term provision. Then assets में tangible assets दे दिया, intangible asset में trademark है. That also we should take it. Other non-current assets में preliminary expenses we should not take. Current assets में inventories, trade receivable, cash and cash equivalent. So share capital 10,000 shares of 10 each. So we don't have preference. Reserves and surplus. Short-term provisions में provision for taxation or workman's saving account. ये दोनों भी outside liabilities. Tangible assets, land and building, plant and machinery. The plant and machinery is worth 60,000. Present value, realizable value of plant is 60,000. ये लेंगे. And land and building are 1,30,000 as valued by independent valuer. Rupees 5,000 of debtors is to be taken as bad. Debtors में से 5,000 रुपए bad debts है. Bad debts ये loss है. तो debtors में से 5,000 रुपए निकाल देंगे. The profits of the company were 1986 50,000, 1987 70,000, 1988 60,000. Again ये problem में balance sheet भी दिया, profits भी दिया. So just like the previous problem, we have to calculate intrinsic value and also we have to calculate the yield value.
It is a practice of the company to transfer 20% of profit to reserve. तो एवरेज प्रॉफिट मालूम करेंगे, जस्ट नाउ व्हाट वी हैव डन, उसमें से 20% विल ट्रांसफर टू रिजर्व, देन रिमेनिंग प्रॉफिट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स. Ignoring taxation, find out the value of the share of the company on the net intrinsic basis and also on yield basis. दोनों मेथड से कैलकुलेट. Shares of similar companies quoted in the stock exchange yield 12% on their market value. So this is the NRR. Goodwill of the company may be taken at 1 lakh. 1 lakh rupees should be taken goodwill. Now see the calculations here. Calculation of intrinsic value of share. Land and building 1,30,000, goodwill 1 lakh, plant and machinery, trademark, stock. डेटार्स में से 5,000 रुपए बैड डेट्स निकाल देंगे. 48,000 रुपीज आर द डेटार्स, आउट ऑफ विच 5,000 रुपीज आर बैड डेट्स निकाल दिए. देन बैंक बैलेंस 3,98,000 इज द टोटल ऑफ एसेट्स. आउटसाइड लायबिलिटी में टैक्सेशन रिजर्व, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, क्रेडिटर्स, 3 आउटसाइड लायबिलिटी, सब्ट्रैक्ट कर दो 80,000. तो शेयर होल्डर्स फंड वी गॉट 3,18,000. देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देन रिमेनिंग बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड 3,18,000. Then intrinsic value is equal to equity shareholders fund divided by number of equity shares. 3,18,000 divided by 10,000 shares. 31.80 is the intrinsic value. Now we have to calculate the value of share according to earning capacity method or yield basis. Profit for the year 1988. Current year 1988 है और 1988 में एक लॉस है, बैड डेट लॉस 5,000 रुपए का. तो प्रॉफिट जो प्रॉब्लम में दिया है वो 60,000 रुपीस इज द प्रॉफिट फॉर 1988. बट आउट ऑफ 60,000 वी हैव टू डिडक्ट 5,000 फॉर बैड डेट्स. तो 60,000 माइनस 5,000, 55,000 इज द करेक्ट प्रॉफिट ऑफ 1988. अब करंट ईयर जो 1988 का प्रॉफिट लेंगे हम 55,000. तो एवरेज प्रॉफिट 50,000, 70,000, 55,000. प्रॉब्लम में पहले 60,000 दिया था, उसमें से 5,000 रुपए बैड डेट्स के निकाल दिए, तो करेक्ट प्रॉफिट 88 का 55,000. तो एवरेज प्रॉफिट 58,333.33. अब ये एवरेज प्रॉफिट 58,333.33. अब इसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व 20%, 11,667. देन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स 46,666.66. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट अवेलेबल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100. Profit available 46,666 or 1 lakh rupees equity share capital into 100. 46.67% is the ERR, expected rate of return. Now yield, value of share, yield value. ERR, expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value per share. So expected rate of return 46.67 or normal rate of return 12% into 10 rupees is the paid up value per share. एक शेयर का पेड अप वैल्यू 10 रुपये. प्रॉब्लम है बैलेंस शीट में देखिए 38.89 इज द यील्ड वैल्यू. सो वी हैव कंप्लीटेड 8 प्रॉब्लम्स on calculating the intrinsic value and the yield value.